All right, Radhika, stay with us. We have some more breaking news coming in. In fact, Jat leaders now arriving to meet with Amit Shah. That is the visual that is coming in at the moment of Jat leaders coming in to meet Amit Shah. Remember that the first phases of the UP election are very, very crucial, given that they would be in western Uttar Pradesh, where the Jat voters, of course, would play a very, very important role in deciding the mandate. In that light, the leaders of the Jat community meeting with the Home Minister is being seen as very, very significant. Now, remember, this is a meeting taking place at Member of Parliament in the national capital, Parvesh Verma's residence, and that's where, in fact, this crucial meeting of the different Jat leaders along with the Home Minister Amit Shah is just beginning now. We understand that those leaders have arrived at the residence of Parvesh Verma. Let's go across to Mohit Bhatt for more on this. Mohit, take us through the number of leaders who are arriving there. What really is expected at today's meeting? Well, you see, the BJP, when they were planning for Amit Shah's tour in Uttar Pradesh, specifically the focus was on Western UP. And we know for a fact that how Amit Shah started his UP campaign from Kairana, Meerut, Shamli. And now what we were being told is that Amit Shah would also be reaching out to various Jat leaders, because post the farmers' protest, specifically the belt of Western UP has been against the Bharatiya Janata Party. We have seen that is called the sugarcane belt, the farmers' belt, and they have been opposing Bharatiya Janata Party. And to reach out to them that how exactly BJP would like to work specifically for the Jat community and farmers, this meeting is very, very important. And the UP in charge of Bharatiya Janata Party, Dharmendra Pradhan, is also part of this meeting. This meeting is taking place at the residence of Parvesh Sahib Singh, who is also a Jat leader. His father, Sahib Singh Verma, was the Chief Minister of Delhi. So all permutations and combinations are being done by the Bharatiya Janata Party. It's a reach out to the Jat community, and we know for a fact that for the first and the second phase, the Western UP goes to poll, and the focus as of now of all the senior leaders of the Bharatiya Janata Party is Western UP, and hence this meeting is very, very, very important. The BJP would like to reach out to the Jat community that how the farm laws were beneficial for the farmers now that the government has taken them back. What exactly BJP has in plan for the farmers of specifically of Western UP. And also we know that in 2019 Lok Sabha election and 2017, the Western UP voted for the Bharatiya Janata Party. The Jats voted for the Bharatiya Janata Party, but this time around, post the farmers' agitation, BJP feels that they are in a dicey spot, and hence this reach out is very important. So we have to wait and watch what exactly will come out after this meeting. Right. And how long is this meeting expected to last for? Any information about that, Mohit? Because as you rightly mentioned, not only has Home Minister Amit Shah toured Western UP recently, he's also expected to visit there tomorrow. Well, yes, and the focus as of now for the first and the second phase of all the leaders of the Bharatiya Janata Party is the Western UP. We know that Sanjeev Balyani is another Jat leader, is also part of the meeting, and the other leaders are also part of the meeting. And again, the tours are being planned for the Western UP area. Now, the various leaders from the Jat community, various heads of various sarpanch panchayats have been called in. Hence, this meeting could go on for a few hours, because the government will try to reach out to the Jat community and specifically the farmers over there in Western UP, that how exactly the government of Uttar Pradesh have increased the price of the sugarcane, and also what exactly the government has in store and their plan for the upliftment of farmers, and specifically if any specific package is being given to the Jat community also, because this was a pre-planned meeting and it is a very important meeting, because we were being told 10 days earlier that this meeting will happen where the Jat community leaders will be meeting Home Minister Amit Shah. Right. Very, very important meeting taking place over there, as you rightly mentioned, Mohit. Amit Shah meeting with leaders of the Jat community. All of this happening in the run-up to the Western UP elections, of course, which would be in the first few phases of UP polls. And that, of course, expected in just a little over a fortnight. Of course, the Home Minister expected to tour in Western UP as well. He has been touring over the weekend and now also expected to tour tomorrow and in coming days as well. Now, this is very, very significant
significant. Now, Mohit, why this meeting is very important is that we had seen through the farmers' protest, there was a perception sought to be built by a section of the farmer leaders that the Jat community was upset with the BJP over the farm laws. Now that the laws have been withdrawn, this outreach taking place, how successful will the BJP be in this outreach is very important, because other political parties such as the RLD are seen to be parties that have traditionally enjoyed the support of Jats, though there have been instances in the past where they have not been supported by the community as well. Mohit. BJP has been getting considerable support from the Jat community in polls since 2014, and it has enabled them to sweep the region in the past three elections, 2014, 17 and 2019. Now, as the first phase of UP polls will start from February 10, BJP is brainstorming over the mood in the community, and also we know that the SP and RLD alliance, and RLD has their quote Jat vote bank that never gets shifted. Now, okay, stay with us, Mohit. I'm told Ravikant is joining us from that location where that meeting is taking place. I want to ask a quick question to Ravikant on this. Ravikant, take us through exactly. आप ये बताइए कि इस तरह जो समीकरण बैठते दिख रहा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, खास तौर से अब चुनाव आखिरी स्टेजेस में है, 2 हफ्तों में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हो जाएंगे. ऐसे में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की इस मीटिंग के अलावा भी जाट कम्युनिटी को बू करने में? देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत असर डालने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के लगभग 2 से 53 नेताओं को यहां पर इनवाइट किया गया है और सभी जाट नेता केंद्रीय गृह मंत्री का यहां पर स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर, और उनको हल दिया गया है. यानी बीजेपी ये जानती है कि अगर जाट वोट बैंक डिवाइड होता है तो उनको पहले फेज में नुकसान होगा, वही जाट वोट बैंक डिवाइड न हो, उसकी पूरी कवायद यहां पर चल रही है. उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहां पर हैं, कैप्टन अभिमन्यु यहां पर हैं, संजीव बालियान यहां पर हैं, सतपाल सिंह यहां पर हैं, सारे जाट नेता यहां पर मौजूद हैं और जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है और जो कमान है वो सीधे अमित शाह के हाथ में है. अब बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि अगर जाट वोट देता है तो पूरा का पूरा जो है मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव बनेंगे, जिन्होंने इनके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे. ऐसे में जाट वोट बैंक डिवाइड न हो, यही प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए. इसी के लिहाज से ये मीटिंग बुलाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर जाट लीडर्स को संबोधित करने वाले हैं. अब देखना यह है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, किन किन लोगों को वहां पर ड्यूटी पर लगाया जाता है. और बीजेपी ये तय मानकर चल रही है कि जितना नुकसान बताया जा रहा है, जितनी नाराजगी बताई जा रही है, उतनी ग्राउंड पर जाटों की नाराजगी बीजेपी को लेकर नहीं है. बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने यहाँ पे रविकांत. कहा जा रहा था खास तौर से जब किसानों का आंदोलन चल रहा था बाहर ये तीनों कानून को लेकर, अब उन कानून को तो रद्द किया गया ही है, साथ ही में वो विरोध प्रदर्शन जो है उनका भी अंत हो गया है. और ऐसे में बीजेपी अपने जाट नेताओं को, गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, बट साथ में कैप्टन अभिमन्यु हो, संजीव बालियान हो, उत्तर प्रदेश हरियाणा के टॉप जो जाट नेता है उनको भी यहां बुलाया गया है. आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या जाट कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स होने की भी संभावना है? देखिए, 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर आ रही है और उससे ठीक पहले ये जो बैठक हो रही है इसमें बीजेपी ये बताने जा रही है कि किस तरीके से किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं. चुनाव से ठीक पहले जो ट्यूबवेल के बिल थे बिजली के, उसको आधा कर दिया गया. इसके साथ ही आने वाले दिनों में किसानों को लेकर क्या कुछ करने जा रही है वो संकल्प पत्र में बीजेपी 1 से 2 दिन के बीच में पब्लिक डोमेन में लेकर आ रही है. ये जाटों की नाराजगी का जो पूरा का पूरा मुद्दा है, बीजेपी उसको इस एंगल में रखना चाहती है कि अगर जाट कम्युनिटी गठबंधन के साथ जाती है तो जयंत चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे. ऐसे में जाट समुदाय को ये याद रखना चाहिए कि 2013 में उनके साथ क्या कुछ हुआ. ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े जाट लीडर वो कह रहे हैं कि हम सबको पसंद कर सकते हैं, सबको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते. यही रणनीति है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी फर्स्ट फेज में इलेक्शन में जा रही है.
All right, we have Anurag Bhadoria joining us on the phone line as well. हमारे साथ बने रहिए रविकांत. Let me quote a quick word from Anurag Bhadoria. Anurag Bhadoria, जो ये कोशिश की जा रही है इस वक्त बीजेपी की ओर से जाट कम्युनिटी को वो करने की, गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, साथ में बीजेपी के अन्य नेता भी हैं, और ये 136 जो सीट्स हैं वेस्टर्न यूपी में, उनमें जाट कम्युनिटी का प्रभाव दिखता है, और बीजेपी ने 136 ऐसे सीट वेस्टर्न यूपी में 2017 में जीते थे. तो ऐसे में इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी. जिन किसानों का सम्मान आपको करना चाहिए था, उनको 15-13 महीने तक आपने धरने पे बैठाए रखा. उनके 700 किसानों की मौतें हो गई, उनके परिवार के परिवार बर्बाद हो गए. इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? कैसे लेंगे जिनको आपने चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या नहीं बताया? कैसे कैसे आपने उनके प्रति शब्दावली का इस्तेमाल किया? तो क्या वो किसान भूल जाएगा जिस किसान का आपने अपमान किया? और आप चाहते हो कि बाद में हम मिल लेंगे, मिलने के बाद उनसे मीटिंग कर लेंगे तो किसान मान जाएगा? अरे किसान इतना आसान नहीं है कि किसान को आप गाली देंगे, किसान की मौत भी हो जाएगी, किसान को रौंद भी देंगे और फिर कहेंगे कि आओ हम वोट के टाइम आओ चाय पिलाते हैं. जब वोट नहीं था तो आप उनको कील कांटी उनके रास्ते में बिछा रहे थे. आपको पता था कि अभी वोट तो है नहीं, तो कील कांटी बिछाओ, इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली बताओ. तब तो आप मवाली बता रहे थे. तो मवाली के साथ फिर आप उसके बाद मीटिंग हो रही है. यही कहते हैं ना कि अब इस देश का जनता जागरूक है, और उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण जनता. आपने किसानों पे लाठियां चलाई, उनको रौंदा. छात्रों पे आप लाठियां चला रहे हो, कुंतल से मार रहे हो उनको लगातार. महिलाओं का चीरण हुआ, गरीबों को आपने बेरोजगार कर दिया, महंगाई से मार डाला. तो किस वर्ग का आपने सम्मान किया? अनुराग भदौरिया, सवाल ये उठता है कि आपने जो अभी मुद्दे उठाए हैं, इन सब के बावजूद जो हमें सामने दिख रहा है ये कि कई सारे नेता, 100 से अधिक नेता जाट समुदाय के इस वक्त जो बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा हैं उनके घर पे मौजूद हैं, और सब इस वक्त एटलीस्ट अमित शाह को, गृह मंत्री को स्वागत करते हुए दिख रहे हैं. तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ये बहुत अहम सवाल उठता है, और इसे कैसे काउंटर करेगी समाजवादी पार्टी? मैंने आपको बता दिया ना, उत्तर प्रदेश के अंदर में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दर्द दिया, किसानों को रौंदा, उनकी इनकम दुगनी करने की बजाय उनको लाके धरने पे बैठा दिया. आपने छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो. आपने राइफल के बट से उनकी पीठ को पायदान बना दिया. आपने जिस तरह से महिलाओं का अपमान और अत्याचार हुआ, जिस तरह से शराब माफिया पैदा किया, आपने भू माफिया पैदा किया उत्तर प्रदेश के अंदर में. महंगाई, बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की. कोविड काल में लोगों ने अपने लोगों को कैसे खोया है, बिना ऑक्सीजन के तड़प के लोग मरे हैं. तो आपने किसका सम्मान किया? ऑल राइट, अनुराग जी हमारे साथ बने रहिए. अनिला सिंह बीजेपी की भी जुड़ रही हैं हमारे साथ. जी, सवाल आपने जो उठाए हैं वो सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह से पूछना चाहूंगा. अनिला सिंह, द समाजवादी पार्टी इज सेइंग दैट बीजेपी ने काफी देर कर दी. पिछले 1 साल तक जो किसान विरोध कर रहे थे उनको आपने इज्जत नहीं दी. ये दिस इज द एलिगेशन दैट समाजवादी पार्टी इज रेजिंग, एंड दे आर गोइंग टू सर्टनली रेज द फार्मर प्रोटेस्ट इशू टू काउंटर द बीजेपी's outreach to the Jat community. Your response to that? There is no farmer protest in today's date. And whether, if I talk about farmers particularly, whether they are happy with Bharatiya Janata Party or not, they will vote accordingly. अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि देर कर दी. आप जल्दी कर दीजिए. आपके नेताओं ने किस प्रकार से बोला है, आदिल चौधरी ने और नाहिद हसन के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बोला नहीं है क्या कि जाटों में घुस भर देंगे? Not a single reaction from Akhilesh Yadav ji, not a single reaction from Jan Chaudhary. Jan Chaudhary, he tries to claim himself as a Jat leader, Jat face, but if somebody from Samajwadi Party, a person who is going to contest election, he says हम जाटों में घुस भर देंगे, और जयंत चौधरी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, या तो जाटों के विषय में जयंत चौधरी को कोई समझ नहीं है. अभी तक पापा जी पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब फ्री फंड में इनको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया है. अनुराग भदौरिया, विद भारतीय जनता पार्टी एंड दे आर गोइंग टू स्टे विद अस. देखिए, इन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया किसानों का. किसानों हाँ को जो 700 किसानों की मौत हुई उसके बारे में नहीं बोलेंगे. इसलिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी कहती है ना, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सही कहती है यूपी में काबा. अरे यूपी में ईबा नहीं, यूपी में रोजगार के बंटाधार बा, छात्र पे अत्याचार बा, छात्रों की पीठ पे कुंदे की मार बा, जुल्म के अंबार बा,
छात्र के पुकार बा अखिलेश भैया ही बचाओ बा। ये सुन लीजिए कान खोल के। आप लोगों ने छात्रों पे भी लाठियां बरसाई, किसानों पे भी लाठियां बरसाई, यहाँ पे रोजगार मांगने गए उन पे भी लाठियां बरसाई। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, महिलाओं का चीरण हुआ, किसानों को आपने मवाली बोला, गुंडा बोला, आपने उनको क्या क्या नहीं बोला। क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम अनिला सिंह, क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम अनिला सिंह, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अनिला सिंह को मैं मौका देना चाहता हूं जवाब देने का। माय कोलीग्स Padmaja Joshi is of course joining me and senior journalist Mr. R. Rajgopal and also joining us on the broadcast. Before I go across to them, Anila Singh. मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उसी कौम से आती हूँ जिसकी बात अभी हो रही है, और उस कौम के लिए बोला गया है कि हम घुस भर देंगे। समाजवादी पार्टी के जो 2 टेस्ट करेंगे, इनकी जो गैंगस्टर्स और लैंड माफिया की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उसी में से ये दोनों कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा जाट नेताओं में घुस भर देंगे। तो अनुराग भदौरिया जी भी आबा काबा यानी कौन सा बा आप बोल रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये भाषा नहीं बोली जाती है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं कि कोई आंख उठाकर भी ना देख ले जाटों की ओर, कोई आंख उठाकर भी ना देख ले, आंखें है ना काट के रख देंगे हम। All right. जाके बता दीजिए अपने नेताओं को। Okay, let's be mindful of our language. Let's please, objectionable comments may have been made. I'm not going to justify any objectionable comments. Let's not further them by repeating them here on national television. My request to all our panelists. Let me quickly get in a word from my colleague Padmaja, Mr. R. Rajgopal, senior journalist, also joining us on the broadcast. Padmaja, a pitched battle being fought in Western UP for the Jat vote, and that is very clearly manifested in the kind of extremely sharp rhetoric we've been seeing over the last several days. Absolutely. In fact, the case that Ms. Anila Singh was referring to is very interesting. We had highlighted it yesterday also. In fact, it was related to a Samajwadi Party supporter of Nahid Hassan who had given that speech in Shamli when he was talking about the Kairana seat fight, and that man who is Arshad was arrested by the UP police. That has also been put out by the BJP, and it's very calculated the way they are highlighting that there may be problems, that you've got somebody who's from the Samajwadi Party actually threatening the Jat candidate of the RLD. So that was the case that Anila Singh was referring to. But if we just talk about the optics and the fact that this meeting is taking place, very significant. The fact that, you've got these Jat leaders, if we look at the images today, Madhav, of them giving a safa to Amit Shah. They've even got a ceremonial hookah. Now, hookah, whenever you're touring in Western Uttar Pradesh, even in fact at the Singhu border when the protests were happening by the anti-farm law protesters, the hookah was almost used as a sign of community, Mother. And it's very, very important. When we had gone actually to the borders, we saw in the middle of a pandemic, the people who were sitting there on protest were sitting in circles and sharing a hookah. And when we asked them about it, they said, "Hamare khaap ka hookah hai." So for them to get this hookah and present it to Amit Shah, all of these are optics which are very important today, because imagine then all of this on video when it will be circulating in those areas of Western Uttar Pradesh, and it is definitely a tight fight. Like we said, in 2017, you got 50 plus seats that the BJP got from this region alone. And in 2019, they had almost a clean sweep of the Lok Sabha seats in Western Uttar Pradesh. So the key right now, and we keep saying this again and again, that you've got that Ganna Jinnah theme that is being reiterated by the BJP again and again. They are reaching out to their core voter, the Jat voter, who is angry with them on the back of the anti-farm law protest, and they are hoping to win back their loyalty. So it's in that light that we should see this massive outreach which is happening today. It is the Home Minister Amit Shah. You've got the UP in charge, Dharmendra Pradhan, there with him. All the Jat leaders, the MLAs, they have been called. There are leaders also, I'm told, from the Jat community, from Haryana, from Delhi, who are there at this meeting. And tomorrow, you've got another very senior face and former Chief Minister of Uttar Pradesh, Rajnath Singh, who is going to begin his tour. He's going to do these panchayats, Kisan panchayats in Jatland. He is going to go to Bagpat. He's going to go to Ghaziabad. So all of these Western UP areas, it's not. So Amit Shah in that sense is kicking off that one-on-one interaction, and all the other senior leaders are also subsequently going to be fielded. That being said, people like Sanjeev Balyan, people like... we have Mr. Sanjay Jha. Padmaja, please stay with us. We have Sanjay Jha also joining us.
Yes, if I can just request you to hold on to your thoughts for a moment. Sanjay Jha, where really does the Congress figure in all of this? Pitch battle being fought by the SP and the RLD against the BJP, but it doesn't seem that the Congress is figuring anywhere just yet. Well, Madhav, the truth is that in that part of Uttar Pradesh, and to be honest, in large parts of Uttar Pradesh, the battle, I think, is being fought between the BJP and the Samajwadi Party. The Congress will have its successes, I believe, in certain constituencies where it has had its traditional votes. A lot of it, of course, has withered away. Now, the question remains, I have talked to a lot of Congress people there, and some of them believe that there has been traction definitely in terms of mobilization of young women voters, but whether that will be significant enough to win seats along with the Congress's other, targeted, shall we say, issues, that remains to be seen. But you're right. I think the real issue is, have the farmers return to give trust back to the BJP. Please remember that over the last 1 year, the BJP has been seen as an anti-farmer party, essentially in that part of the country. In what I mean is Punjab, Haryana, and in large parts of Western Uttar Pradesh. Now, it may not be the case in, say, South India or even Western India, but there is been the perception that the BJP has been more in terms of the institutional corporate farming as opposed to the traditional farmer who wanted the MSP. Now, will these token, a lot of what we're talking about today is optics, is atmospherics. Will that be enough to reassure them that the BJP means to be kind on MSP? You don't know. One of the things I believe the BJP is capable of doing, and I'm trying to, shoot from the hip here, the budget is being announced on Feb 1. And I believe that although the budget should not be unethically exploited, the BJP is capable of giving the farmers some kind of a sop. It may be even an MSP assurance. So, important point. Let me, Sanjay, I'd like to thank you for joining us. Let me put that question across to Mr. Rajgopalan, who's also with us. Mr. Rajgopalan, thank you so much for holding on. Bhupendra Chaudhary, our senior news editor, also joining us on the broadcast. But let me first go across to Mr. Rajgopalan. Two important points that Sanjay Jha is making. He's saying there's a perception because of the farm agitation that the BJP, particularly in Punjab, Haryana and Western UP, has not been fair with the farmers. That's a perception certainly that opposition parties would want to exploit, and also, of course, whether today's images are an indication of some big announcement also coming out perhaps from the budget. Amit Shah meeting the farm leaders, especially the Jat leaders, is very significant. Padmaja has elaborated very well. Beyond that, nothing to be added more. But my understanding, Madhav, perception of budget, perception of agriculture, if you compare this with last year same time, there was a commotion. But BJP very cleverly taken out that farmers' agitation from the main election campaign. That is why today Mr. Amit Shah has gone into the confabulations with Jat leaders, and as Padmaja has put it, that hookah diplomacy. And hookah diplomacy is going to play a major role because in Jat areas, hookah is a major one. And apart from that, as Sanjay Jha has put it, in the budget you can expect a big boom for farmers. Second, Samajwadi Party is rattled with Amit Shah entering into the state, and tomorrow when Rajnath Singh goes to Ghaziabad, it is going to be a very tough fight for Samajwadi Party. A short while ago, Samajwadi Party leader was now comparing about Kanpur. But the same Samajwadi Party in Kanpur created a havoc in Prime Minister's rally. Their own cadres brought a car and beaten the car with Modi's photo, and the Samajwadi suspended that 5 activists of Samajwadi Party. So what does it mean? So Mr. Akhilesh Yadav is rattled with Amit Shah's entry. All right, Mr. Rajgopalan, thank you so much for joining us and breaking that down for our viewers. Let me get in a quick word from Bhupendra Chaudhary as well. Bhupendra Chaudhary, ये हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त जब बीजेपी इस तरह की आउटरीच करते दिख रही है जाट समुदाय को, और हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो टॉप नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, वो सब कैंपेन ट्रेल पे वेस्टर्न यूपी में पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी उतरने वाले हैं। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी परसेप्शन चेंज कर सकती है, ये सवाल उठाया जा रहा है। कई एनालिस्ट जो है इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं, पर्टिकुलरली जहां तक जाट कम्युनिटी का सवाल है। देखिए,
जाटलैंड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वहां पे विधानसभा का 76 सीट है। और आपको आश्चर्य होगा कि 2017 के चुनाव में 76 में से 66 सीटें मिली थी बीजेपी को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों की संख्या है काफी ज्यादा है, जो काउंटर करता है मुसलमान को। तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि जाट को कोई पेरेनियल एनिमी नहीं है बीजेपी से। 2013 में जब दंगा हुआ उसके बाद जाटों की आबादी ने सारे के सारे शिफ्ट हो गए बीजेपी में। उसका परिणाम आपने 2014 में देखा, सारी सीटों पर बीजेपी स्वीप कर गई। चरण सिंह के बेटा पोता सब हार गए चुनाव। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें भी पूरी तरह सफाया हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये इनका प्रेम पहले से 2013 से ही चल रहा है जाटों का बीजेपी से। लेकिन आंदोलन Bhupendra Chaudhary, I'll request you to stay on with us.